Good morning, everyone. My name is Priyanka. Welcome to today's decoding session of the Indian Express and the Hindu. As we all know, Mr. Modi has arrived in the USA for his historic first ever state visit. So, before understanding the different types of visits, the importance of the state visit, and the outcomes of the meeting, the China angle in this meeting, right, and what are the reasons through which both USA and India came closer in their different allies, I would like to request you all of the experience. Please hit the like, share button, and subscribe my channel so that I could provide the newspaper journey in easier way so that I can provide you the videos of the newspaper on time. Okay, so let us begin the journey of our today's decoding session. So here, as we know that this thing, it is the first ever state visit of Modi to the USA. So what is this state visit? See, whenever a state, a head of the state of any foreign country visits to another country, so those visits are classified in different types as per the importance. All right, it could be the official visit, it could be official working visit, guest of government visit, private visit, and with these visits, there are different protocols which are to be followed. So, with respect to the state visit is the highest, okay, it is the most important, it is the highest when it comes to the friendly relations between the two countries. And what happens in the state visit is, for example, this is your country A, or we could say that is America, and this is your country B. Let's suppose this is India. In the state visit, the host country officially invite the other country. And that is why we see in the news editorials that Mr. Biden has officially invited Mr. Modi to participate or to come for the state visit. And इस visit के भी अपने protocols होंगे. Most important protocol कि मिस्टर मोदी जी को यहाँ पे 21 तोपों की सलामी जो है वो मिलने वाली है. And he will get the chance to address the Congress session of the America when he visits there. So obviously visit ho chuki hai. Yes, he got the chance and he, kept multiple points while addressing the US Congress session, right? So I hope this state visit is clear. What is state visit? What is the importance of state visit? See, it is important because it is the most important when it comes to the friendly relations between India और ये जो इंडिया और यूएस का जो फ्रेंडली रिलेशन हुआ है इसका एक जेस्चर हमको पहले भी देखने को मिला था व्हेन एट द टाइम ऑफ G7 मीटिंग जो कि हिरोशिमा में हुई थी. If you all remember that news articles were filled with the videos that Mr. Biden has asked the interview of Mr. Modi. Mr. Biden has hugged Mr. Modi, the Prime Minister of India. So yes, that was pretty something which we can consider as a positive gesture from the side of the USA, to make the friendly relations with the India. But what about this friendly relation between India and USA? Was it something which is consistent from the past years, or it is sudden, or what are the past scenarios? So yes, we will compare with it. So firstly, let's have a look. The outcomes of the meeting were broadly into 5 to 6 categories were divided. It was the defense sector. It was regarding the fighting the terror and the drugs, which is a major problem in today's time. The technology was there, people-centric efforts, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडो पैसिफिक एंड हेल्थ. देखिए इन सभी सेक्टर्स का अपने अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है. कैसे? अगर हम टेरर और ड्रग्स के बारे में बात करते हैं तो इट इज अ टॉपिक जिसके लिए सारे कंट्रीज आज के डेट में परेशान हैं. तो यस, shaking hand together in respect to the terrorism would definitely help the citizens of both the countries. Yes, we will look on this. Technology and defense. अगर कोई भी कंट्री टेक्नोलॉजी और डिफेंस में अगर आगे आती है, ठीक है, अगर वो हाथ मिलाती है तो यस देर इज श्योरिटी दैट दे विल बी द globally leaders in the coming time in the world, right? Sustainable development, climate change is a big issue, right? So we'll definitely discuss on it as well.
Indo-Pacific, the most discussed topic in the last few years. Its importance is a lot in the health, right? So in this video, basically, we will be discussing about the defense, we will be discussing about the health, as these two topics will take longer time, and then the shorter the videos on the other topics will be covering in today's video, right? So let us begin with the defense. देखिए, आज का आपके पास जो ये मीटिंग हुआ था जिसमें मोदी जी यूएसए में गए, तो डिफेंस को लेके बहुत सारी जो डील है वो हुई थी, जो ड्रॉन परचेस अल्टीमेट अल्टीमेट डील, लाइक जिसके लिए इंडिया कब से वेट कर रहा था वो फुलफिल होने को जा रहा है। प्लस यहाँ पे एफ, ये जो 414 या फिर 414 जो भी आप बोलना चाहो, जेट इंजन जो है, इसमें जॉइंट प्रोडक्शन का प्रपोजल देखने को ये मिला है बाय द जीई एंड द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. Also, we are going to procure the MQ-9B Sea Guardian UAV by India to increase its intelligence, surveillance, reconnaissance capabilities. और इसी तरह से और भी जो डील्स है वो यहाँ पे आपके पास एडिटोरियल में साफ मेंशन है. सो इन फैक्ट पे ना जाके अभी मेरा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है आपको समझाना विथ रिस्पेक्ट टू द अलायंस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. ये जो पार्टनरशिप हुई है विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ दिस सिलेबस, उसका फैक्टर्स जो है वो पास्ट में ये रिलेशनशिप कैसा था, व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से इंडिया एंड यूएसए जो है क्लोजर आते हैं. देखिए, हमको पता है कि जो आपके पास प्रेसिडेंट है, sorry, so you know that the America and India, both countries are democratic in nature. Still, their policies, their point of opinions are totally different when it comes to the foreign policies, when it comes to the defense procurement or the defense policies or the trade policies, right? So here our problem or the core discussion topic would be the defense. So yes, we could say that our policies regarding the defense, our opinion regarding the defense are different, were always different, right? So when I talk about the past relations of India and USA with respect to defense, they were totally, we could say, strangers, or we could say that इम्पॉसिबल अलाइज, कि किसी भी हालत में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंडिया और यूएसए इन फ्यूचर कभी भी डिफेंस के अंदर कोऑपरेशन के मामले में साथ में आएंगे. सो ये कंडीशन, ये वर्ड्स यूज किए जाते थे इंडिया और यूएसए का जो डिफेंस रिलेशनशिप है, डिफेंस अलायंस है, उसके तौर पे. रीजंस क्या हो सकते हैं? देखिए, आउटकम्स और जो इवेंट्स थे हमारी हिस्ट्री में जो कि ओकेजनली होते गए थे, जिसकी वजह से ये क्लियर था कि ये पॉसिबल नहीं है. अगर हम एक दो मेजर आउटकम्स के बारे में बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं, पहला फैक्टर बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर, राइट? सो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इन 1971, it was an historical event. So what happened in this event? USA took the side of what? Pakistan. So ultimately, this showed that USA is not the friend of India. USA is not in favor of the India. And another factor is the China, of course. There were multiple events in which it could be seen that China tried its best. China tried everything to keep USA and India apart from each other. The best example, what I could remember for now, is during the Manmohan Singh's state visit. देखिए, अब मैं मनमोहन सिंह स्टेट विजिट क्यों लिख रही हूँ? इंडिया का जो पूरा टेन्योर रहा है आपके पास, ठीक है, उसमें मोदी जी से पहले दो प्राइम मिनिस्टर और थे जिनको स्टेट विजिट के लिए आपका इन्विटेशन मिला था. इनिशियली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज देयर, जिनके नाम पे हम टीचर्स डे का सेलिब्रेशन भी करते हैं. एंड देन वी आर हैविंग मनमोहन सिंह, और फाइनली आफ्टर अ शॉर्ट टाइम वी can see that Mr. Modi is invited, right? So मनमोहन सिंह के टाइम पे देखिए,
डिफेंस के बारे में तो कोई बात हुई नहीं थी क्योंकि हमको पता है कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो ऑलवेज हेजिडेंट थी. इट वाज ऑलवेज अ हेजिडेंट पॉलिसी विद यूएसए in terms of the defense. So at the time of the Manmohan Singh, if I notice, he talked about the nuclear energy field. तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी की जो फील्ड है एक ऐसा एरिया है जहां पे इंडिया और यूएसए साथ में काम कर सकते हैं एंड इट वुड लीड टू मल्टीपल बेनिफिट्स इन बोथ द साइड्स लाइक इन इंडिया आल्सो एंड यूएसए आल्सो बट चाइना वाज totally reluctant for this. China just said clearly to the USA that he just opposed this idea, right? That no, US should not do anything of such manner, right? So from this we could say that China was the factor जिसकी वजह से इंडिया एंड यूएसए का जो रिलेशन है कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया और भी काफी फैक्टर्स रहे हैं चाइना और भी काफी इवेंट्स रहे हैं चाइना की तरफ से बट एक और जो मेजर फैक्टर है अगर हम दूसरों को ब्लेम ना करना चाहे और खुद की तरफ देखना चाहे तो इंडिया खुद भी रिस्पॉन्सिबल है इस हेजिडेंट पॉलिसी के लिए. देखिए इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है आई होप एवरीवन नोज अबाउट इट क्योंकि ये काफी बार कवर हो चुका है. सो इफ आई टॉक अबाउट द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जिसमें इंडिया हैज डिसाइडेड दैट वी विल नॉट बिकम अलाई ऑफ एनी ऑफ द पार्ट स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द two greater powers in the world, right? So this was a reason that yes, ये इंडिया का खुद का एक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया और यूएस के अंदर कभी भी एक स्ट्रॉन्ग जो रिलेशनशिप है वो नहीं बन पाया. करेक्ट. देन व्हाट हैपेंड नाउ कि जो रिलेशनशिप्स है वो स्ट्रॉन्गर बने तो इसका जो फाउंडेशन है राइट सो वी कुड से करंटली अगर मैं देखूं जो करंट सिचुएशन है राइट सो इंडिया एंड यूएसए आर स्ट्रॉन्गर इन रिलेशंस राइट इंडिया एंड यूएसए की जो रिलेशंस है दे आर प्रिटी मच स्ट्रॉन्गर when it comes to the trade when it comes to the defense. तो यहाँ पे हम लोग डिफेंस की टर्म्स में अगर बात करते हैं तो ये ऑल ऑफ सडन तो नहीं हुआ. मनमोहन जो सिंह है इसका जो फाउंडेशन है आई कुड से वो रखा गया था मनमोहन सिंह के टाइम जो हमने अभी डिस्कस किया व्हेन ही टॉक अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी राइट. ऑफिशियल विजिट तो जब मनमोहन सिंह जी गए थे तो उन्होंने बोला था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी की जो फील्ड है ऑन दैट फील्ड वी कैन डेफिनेटली वर्क टुगेदर बट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज देयर वाज नो मेंशन ऑफ द डिफेंस. ठीक है. अब इसके बाद में बहुत सारे स्टेप्स ऐसे थे जो यूएसए ने भी लिए. ठीक है. एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाते हुए कि yes we are interested in India. So we could say there were certain welcome steps from the USA as well, right? So these I could mention as the welcome steps from the USA, which shows the positive gesture towards India. What देखिए 2019 में we all know the historical event which took place in India. The Indian government decided to bifurcate the state of Jammu and Kashmir into two union territories, that is the Jammu and the Ladakh territory. And on this matter, both the Pakistan and the China were moving to the UNSC, were moving to raise this issue in the United Nations Security Council, but USA prevented both of them to move in the UNSC. देखिए पाकिस्तान और चाइना इंडिया के ऑल टाइम दुश्मन रहे हैं. ठीक है. तो इनिशियली देखा जाता था कि हमारी जो हेजिडेंट पॉलिसी थी वो क्यों थी क्योंकि यूएसए हमेशा हमारे दुश्मनों का साइड लेता था पाकिस्तान का साइड लेता था चाइना का साइड लेता था राइट. बट अभी जब हम वेलकम स्टेप्स के बारे में बात कर रहे हैं वी कैन क्लियरली सी दैट इंडिया की तरफ एक वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. कैसे ये इस इवेंट में आपको देखने के लिए मिल सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को डेफिनेटली दे प्रिवेंटेड फ्रॉम द यूएनएससी. एक और इवेंट हुआ था आई थिंक इट इज समथिंग अराउंड 2020 जब चाइना ने इंग्रेशन किया था इंडिया राइट. सो वी कुड राइट ओवर हियर एज चाइनीज इंग्रेशन इन इंडिया. ठीक है जी. तो इस केस के अंदर भी यूएसए ने क्या किया इंडिया की हेल्प करी विद द इंटेलिजेंस with the इक्विपमेंट्स राइट. सो दीज वर द टू
मेजर इवेंट्स जिसके थ्रू हम ये नोटिस कर सकते हैं दैट यस यूएसए वाज आल्सो इंटरेस्टेड to raise his friendly to raise his hand towards making a friendly relations with the India and the USA. But despite all these steps, welcome steps, हमारी पॉलिसी जो है वो हेजिटेंट ही रहती है और ये हेजिटेंट पॉलिसी को साइडलाइन करते हैं दी ऑल टाइम फेवरेट मोदी प्राइम मिनिस्टर और वी कुड से दैट मोदी की गवर्नमेंट जो थी इसके अंदर इसको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया जाता है कैसे 2016 के अंदर मोदी जी जब यूएस विजिट में आपके पास जाते हैं तो इन द यूएस विजिट ऑफ 2016 देखिए अब यहाँ पे आप ये मत कहिएगा कि आपने तो कहा था कि ये इनकी फर्स्ट यूएस विजिट है ना जी ना देखिए मिस्टर मोदी जो है ही वेंट फॉर मल्टीपल विजिट्स इन द यूएसए बट ये उनकी पहली स्टेट विजिट थी एंड एज आई मेंशन जो स्टेट विजिट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें जो होस्ट कंट्री वो ऑफिशियली आपको इनवाइट करती है और अगर हम अमेरिकन टर्म्स में बात करें तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है कि ही कैन कॉल द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका or he or she, the president of America, can call any head of the state of the foreign country only twice in their complete tenure. एंड मिस्टर मोदी के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है कि ये पहली बार ही इनवाइटेड हुए हैं तो दैट इज द रीजन इट इज इम्पोर्टेंट तो मोदी की ये आपके पास जो स्टेट विजिट हुई है 2016 में उनमें ये क्लियरली उन्होंने डिफेंस की जो बात है वो छेड़ी है तो भाई पहली बार ऐसा होता है कि किसी ने डिफेंस की जो बात वहां पे इनिशिएट करी है तो दैट वाज द रीजन यस 2016 की जो मीटिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी ठीक है तो हम क्या बोल रहे हैं कि 2016 में 16 के अंदर 16 में मोदी की जो विजिट थी यूएसए के अंदर दैट वाज द विजिट जिसमें मोदी जी ने बोला था कि अगर हम सप्लाई करते हैं चाहे वो गुड्स की करते हैं या हमारे बीच द सप्लाई ऑफ सर्विसेज और द कैपिटल राइट चाहे वो ट्रेड में हो और in the defense. So here lie the key word. So what Modi ji has discussed in that meeting that the supply of goods, services and capital in trade or the defense will ultimately lead to the job creation in both the job creation in both the countries, right? तो दोनों कंट्रीज के अंदर इट विल लीड टू द जॉब क्रिएशन तो ये जो जॉब क्रिएशन का जो एंगल है वो मोदी जी ने बहुत ही स्किलफुली वहां पे प्रेजेंट किया था एज ऑलवेज मोदी जी रॉक्स राइट ही हैज अ वेरी गुड स्किल व्हेन इट कम्स टू द कम्युनिकेशन व्हेन इट कम्स टू द डिस्कशन और वो यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है कैसे देखिए मोदी जी ने कहा कि अगर हमारे पास डिफेंस के अंदर कोऑपरेशन होता है तो ये टू वे बेनिफिट हो सकता है राइट so defense cooperation can lead to the two-way benefit that means mutual benefit आपको भी फायदा है हमारी कंट्री को भी फायदा है कैसे जी पहली अगर हम बात करते हैं जॉब क्रिएशन के अंदर अगर इंडिया के अंदर डिफेंस कंपनीज या फिर जो एरोस्पेस कंपनीज है इनके अंदर ग्रोथ होती है तो अल्टीमेटली इंडिया के बाद तो अल्टीमेटली जो अमेरिकन कंपनीज है उनकी आपको ग्रोथ जो है वो देखने के लिए मिलेगी ठीक है वाई बिकॉज इनके जितने भी आपके पास रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स है इंडिया के अंदर दे विल अल्टीमेटली ग्रो राइट सो देर आर मेनी कंपनीज इन इंडिया फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स वो भी क्या करेंगी ग्रो करेंगी प्लस अगर मैं आईटी रिवॉल्यूशन के बारे में बात करूं देखो इंडिया के अंदर आईटी रिवॉल्यूशन के बारे में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो नहीं जानता इट इज टोटली इन द बूम इंडिया इज टोटली चेंज्ड वेदर इट कम्स टू द यूपीआई पेमेंट और एनी अदर थिंग्स वी ऑल आर फेसिंग द आईटी रिवॉल्यूशन तो ये जो आईटी रिवॉल्यूशन इंडिया के अंदर हो रहा है इसके अंदर भी जो भी मेजरली अगर मोस्ट ऑफ द चीजों की हम बात करें तो इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द नॉट कम्प्लीटली बट यस एट अ सर्टन लेवल इट इज बेस्ड ऑन द यूएस टेक्नोलॉजी एंड द सॉफ्टवेयर तो इससे यूएसए जो है उसका जो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो डेफिनेटली कम होगा एंड यूएसए विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव ग्लोबली ठीक है तो ये और फैक्टर जो है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि द ग्रोथ ऑफ इंडिया इन द डिफेंस
in the aerospace, in the trade, ultimately lies in the interest of the America, right? तो ये पूरी तरह से आपके पास अमेरिका का जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे ये शो करता है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर हम पूछे कि व्हाट आर द हिस्टोरिकल, नॉट हिस्टोरिकल बट व्हाट वर द ओकेशनल इवेंट्स जिसकी वजह से इंडिया एंड यूएसए, बोथ द कंट्रीज हैव चेंज देयर फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। इसको समझने से पहले एक चीज हम यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। देखिए, हम दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। एक कि व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से यूएसए ने अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करी, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करी। यूएसए का बहुत ही क्लियर फंडा है, बहुत ही जो रीजन है वो बहुत क्लियरली दिख रहा है मुझे। देखिए, वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड है तब से लेके जो यूएसए की अगर बेस्ट एलाइज की अगर हम बात करते हैं तो वो 5 या 6 है ज्यादा से ज्यादा। यू हैव द जापान, यू आर हैविंग, फिर आपके पास जर्मनी है, इटली है, यूके है, फ्रांस इज ऑल्सो देयर, एंड कैनेडा। बट अगर आप डेली न्यूज अपडेट रख रहे हैं, यू मस्ट बी अवेयर दैट द कंडीशंस ऑफ ऑल दीज कंट्रीज आर वेरी पुअर। इनके जो हालात हैं वो बहुत ही खराब है। मिलिटरीली दीज कंट्रीज आर वीक, इकोनॉमिकली इनकी कंडीशंस जो है वो बहुत ही बदतर है। इवन अगर मैं बात करूं जर्मनी की, ये जर्मनी तो आपके पास ऑलरेडी रिसेशन में जा रहा है, ठीक है। तो इट इज ऑब्वियस कि इस टाइम पे यूएसए जो है अपना जो फोकस है वो कहाँ पे शिफ्ट करे, इंडिया की तरफ शिफ्ट करे। वाई? बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द टॉप कंट्रीज जिसकी जीडीपी जो है बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है, ठीक है जी। इसकी जो जीडीपी है, एक डेटा के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 2028 तक इंडिया जो है जर्मनी और जापान जो है इनको पीछे छोड़ सकती है। और हमारे जो टारगेट है दैट इज द 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये किसी से छुपे हुए नहीं है। तो ऑब्वियसली कि ये क्लियर है कि इनका जो फोकस है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्लस एक और फैक्टर है दैट इज द चाइना फैक्टर एंड अ कॉमन एजेंडा टुवर्ड्स द एशिया, राइट। इसको डिस्कस करने के से पहले एक बार मैं आपको इंडिया के टर्म्स में कुछ बताना चाहूंगी दैट इंडिया को इंटरेस्ट क्यों आ रहा है यूएसए की तरफ से। देखिए, यहाँ पे आपके पास तो एक बहुत ही बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि चाइना के दो मेजर इश्यूज हमको देखने के लिए मिलते हैं। आपके पास एक डोकलाम इशू है, ठीक है, और चाइना की जो कॉन्टिन्यूसली इंग्रेशन होते हैं। So these are the major reasons that both the countries have decided to come together and shake their hands with respect to the defense and with respect to their cooperation. Okay, but I would like to draw your attention कि ये जो इंडिया और यूएसए है, they are coming together not to contain the China, right? Because China is very powerful. You cannot beat China in this, light manner, ठीक है। बट इंडिया एंड यूएसए का ये जो अलायंस है वो मेजरली उनका जो मेजर एजेंडा है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीपोलर एशिया। कि जो आपके पास एशिया रीजन है उसमें कोई एक कंट्री ऐसी नहीं हो जो पावरफुल होता है, एंड रिस्पेक्ट टू ऑल द रीजन्स, रिस्पेक्ट और द सोवरेनिटी टू ऑल द रीजन्स, जो उसका सोवरेनिटी ऑफ ऑल द रीजन्स शुड बी रिस्पेक्टेड। तो ये उनका मेजर एजेंडा है। ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि वो चाइना को आउट कवर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, चाइना जो है इट इज अ वेरी पावरफुल एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ यूएसए एंड इंडिया। और वो दोनों ही एज आई मेंशन दे डोंट वांट टू आउट पावर चाइना। ये एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देख सकते हो कैसे आफ्टर continuous invasion
invasions of China or the continuous fight over the disputed area. इंडिया की जो पॉलिसी है, इंडिया का जो पॉलिसी तो नहीं कहूंगी, पेशेंट बिहेवियर टुवर्ड्स द चाइना डेफिनेटली शोज दैट हाउ significant China is to us. Same thing with the USA that yes, चाइना इज इम्पोर्टेंट, लेकिन यूएसए ने कुछ हद तक अपनी पॉलिसी को चेंज जरूर किया है। ओबामा के टाइम पे, ठीक है, ओबामा के टाइम पे एक G2 करके एक इन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि हम सिर्फ चाइना के साथ मिलके एशिया पे अपना एक जो बायलेटरल टाइज है वो बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इश्यूज ऑफ द एशिया। बट अल्टीमेटली ये बहुत ही बड़ा फ्लॉप जो है वो साबित हुआ, और फाइनली हम ये देख सकते हैं कि यूएसए शिफ्टिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी, जो अपने ट्रेडिशनल अलायंस है उनको छोड़ के वो एक नए जो अलाइज बनाने जा रहे हैं, जैसे ओकस वाज द रीसेंट एग्जाम्पल। ठीक है, so these are the certain factors through which we could say that India and USA are coming together। ठीक है, अब इसके अंदर हम फैक्ट जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ द MQ9 MBC गार्जन एंड ऑल दोज थिंग्स, conclusion of a master ship repair agreement between the US Navy, resolution to operationalize tools to increase the defense cooperation, strengthen the undersea domain awareness cooperation, and agreement to place three Indian liaison officers in the US commands. Inauguration of the Indus X for the joint innovation on the defense and the technology. I hope the section of the defense is clear that what are the reasons, and now you will be able to answer any question in the means with respect to this. Now, the second thing we'll be discussing about, see, terror and drugs is a big topic again. We'll be doing in the next video, Indo-Pacific, next video, health। हेल्थ को हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, इन रिस्पेक्ट टू द हेल्थ ओवर हियर, ये जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट है, डायबिटीज है, डाइजेस्टिव किडनी है, इस पूरे मैटर को समझने से पहले आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द डायबिटीज विच इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। Before this meeting also, continuously it was coming in the newspapers that the cases of diabetes is increased in the India। Okay, the cases of the non-communicable diseases are increasing in India, especially the diabetes। And the states जो आपके डेटा में बताया है the newspapers is like Goa was there, Puducherry was there, Kerala was there। So these are the states which were mostly observed as the case in these states mostly it was observed that the cases of the non-communicable diseases were increasing। Okay, now first of all, what is diabetes, how it is occurring, and why the non-communicable diseases are increasing। डायबिटीज को समझने से पहले हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं कि जो डिजीज होती है ह्यूमंस में, वी डिवाइड इन टू पार्ट्स टू दोज डिजीज। एक होता है आपके पास कॉन्जेनिटल डिजीज एंड एक आपके पास होता है नॉन कॉन्जेनिटल डिजीज। जो कॉन्जेनिटल जो डिजीज है वो आपका वो स्टेज होता है, आई मीन दीज डिजीज आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। देखिए जीन and co. If you break the word, you will understand. So these are the diseases which are present at the time of the birth. All right. And non-congenital are those diseases which we acquire throughout our life due to our lifestyle, due to our bad nutrition, or any harmful exposure. So these are known as the acquired disease. And again, these acquired diseases are of two parts. One is your infectious disease, and the another is your the non-infectious disease. And diabetes is part of this, that is, it is non-infectious in nature। So what happens actually in the diabetes? See, the food we intake, हम खाना खाते हैं for the purpose of energy, so it is in the form of C6H12O6, that is glucose, and glucose is a form of the sugar, right? So whenever we intake this glucose or sugar in our body,
ठीक है. So with the help of blood, this glucose is transferred in the cell of our body. ठीक है जी. What I want to say over here is this is blood, this is the cell of our body, and the glucose is transferred or transported to this cell with the help of the blood. देखो यहाँ पर अच्छे से देखते हैं in the next slide. What I want to say over here is that this is T6H12O6. It is a form of, it is a glucose which is a form of a sugar. So when we intake the food, this glucose comes in our blood, right? And this glucose is transferred in the human cell with the help of this blood. And this transfer or this transportation is done with the help of two hormones. Your one hormone is the insulin, and the second hormone is your glycogen. Clear? And both these hormones are produced by a gland, that is pancreas in our body, which is also known as iris of the Langerhans. लेकिन अब इसमें होता क्या है? देखो ये एक बैलेंस मैकेनिज्म है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो होता है, और ये दो हार्मोन्स कर रहे हैं. इंसुलिन क्या करता है, अगर यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, ठीक है, यानी सेल ने पूरा यूज कर लिया है, अभी भी यहाँ पे अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए ये क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है. और जो ग्लाइकोजन है, अगर ग्लूकोज कम पड़ जाता है तो ये हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देता है. एंड हम बोल सकते हैं कि बाय दीज टू हार्मोन्स इट इज अ बैलेंस मैकेनिज्म. बट इन केस ऑफ डायबिटीज व्हाट हैपेंस इज, जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है इसमें हो जाती है गड़बड़. ठीक है, तो दिस इज अ सिनेरियो. यहाँ पे आपके पास गड़बड़ हो जाती है डायबिटीज के केस में. पहला है यानी कि टाइप 1 डिजीज, जब इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो आपकी बॉडी कर ही नहीं पाती है. दैट मीन्स द प्रोडक्शन जो है वो पैंक्रियाज कर ही नहीं पा रही है. अगर वो नहीं कर पा रही है तो यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल कम करने के लिए कोई भी नहीं होता है, तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हो जाता है. वी से कि हमको शुगर हो गया है, दैट इज अमाउंट ऑफ शुगर आपके पास बहुत ज्यादा है. सो इसलिए डॉक्टर्स आपको मना करते हैं यू कैन नॉट ईट द फूड विच कंटेन्स द शुगर. एंड व्हाट इज द टाइप 2 डिजीज, यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्शन है वो हो तो रहा है, बट आप उसका एफिशिएंट यूज नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, तो फर्स्ट केस यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट, एंड सेकंड यू आर नॉट एबल टू एफिशिएंटली यूज इट. So these are the major types of the diabetes, that is the type 1 and the type 2. ये जो type 1 है ये आपके पास जुवेनाइल डायबिटीज के नाम से भी फेमस होती है, बिकॉज ये मोस्टली जो छोटे एज के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक फैक्टर. एंड जो एज ओल्ड फैक्टर की वजह से डायबिटीज होता है, दैट इज योर टाइप 2. लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में ये जो केसेस है वो बढ़ क्यों रहे हैं, राइट? If I talk about the causes of increasing, firstly, most important cause is your malnutrition. ठीक है, माल न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि आपको खाना कम मिल रहा है. तो माल न्यूट्रिशन इसका मतलब है यू आर लैकिंग इन द न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो इसका रिजल्ट ओबेसिटी भी हो सकता है, इंसान बहुत पतला भी हो सकता है. एक जनरल हम असम्पशन मान के चलते हैं दैट माल न्यूट्रिशन मीन्स कि एक पतला से इंसान. नो, इफ अ पर्सन इज ओबेस ही कैन और शी कैन ऑल्सो बी माल न्यूट्रिएंट. दैट मीन्स उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले हैं, या फिर किसी को खाना मिला ही नहीं है तो वो पतला होते जा रहे हैं. सो बोथ द सिनेरियोस में हम बोलते हैं कि इट इज अ केस ऑफ माल न्यूट्रिशन. अब माल न्यूट्रिशन के जो रीजंस है इसको आप इंडिया के ट्वाइन प्रॉब्लम से जोड़ सकते हैं. देखो एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमी का फैक्टर हम इसमें ऐड करेंगे, दैट इज द ट्वाइन प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, increasing the gap between the rich and poor, right? Increasing the gap between the rich and poor. तो इसके वजह से क्या हो रहा है, एक साइड में जो रिच है उनके पास बहुत पैसा आता जा रहा है, और जो पुअर है उनके पास कुछ भी नहीं. तो बोथ द केसेस आर डेंजरस. हाउ? पुअर आर नॉट गेटिंग द adequate amount of food because of inflation,
इनके पास तो पैसा ही नहीं है कि ये खाना वाना खरीद के काम कर पाए या फिर काम कर पाए, नौकरी ले पाए। तो इनका तो सिनेरियो क्लियर है बॉस। लेकिन जो रिच है, इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल दे आर हैविंग, नो प्रॉपर स्लीप, एल्कोहल, स्मोक, junk food, right? So these are the reasons through which we could say yes, malnutrition is increasing in India. But क्या इसका कोई इम्पैक्ट है? जी हाँ, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर हम डेटा के बारे में बात करते हैं तो 10 में से 7 ऐसे लोग हैं which are, you know, suffering from this disease, and ultimately it has direct impact on the health, on the economy of the country, and the social pressure on the humans which are going right now. Okay, I hope this topic is clear. Now, end of the session for today. Tomorrow we'll be coming with the Artemis Accord, which would be the part of your this टेक्नोलॉजी कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें यहाँ पे क्या किया, तो इसमें हम पर्टिकुलरली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द आर्टेमिस अकॉर्ड। आई एम सॉरी फॉर द राइटिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट टू improve writing on it. And then on sustainable development, yes, it is your topic with respect to the environment and climate change, right? Health we had already did. Indo-Pacific, it is अ डिटेल्ड डिस्कशन जो कि हम पूरा इसमें बात करेंगे। वी कुड टॉक अबाउट इट्स हिस्ट्री एज वेल, व्हाई its name has changed as Indo-Pacific, and why US is so much interested in this. And terror is important to discuss because the definition of terror is not fixed. ठीक है? अगर हम ग्लोबली बात करते हैं तो जो टेरर की जो डेफिनेशन होती है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। अगर इंडिया के अंदर मैं किसी पर्सन को टेररिस्ट बोलती हूँ, so it is not important or it is not mandatory that USA will consider that person as a terrorist, or the Russia will consider that person as a terrorist. And because of these reasons, we face multiple issues. For example, India जो है, जब भी टेररिज्म को लेके, टेररिस्ट पर्सन को लेके कोई भी इशू रेज करता है एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, सो चाइना blocks that discussion, Pakistan blocks that discussion. So we will have a look on these factors as well. Okay, I hope the topic is clear. Thank you everyone, have a nice day. See